And now coming up for the next speaker, ladies and gentlemen, uh, may I please call upon on stage Mr. Paras Kochhar, he's the Vice President of NewsReach India. He's going to be talking on the media and PR tech in Bharat. So please, we would really love to hear your version and your words and your experience on the PR and the strategy marketing. Thank you so much, sir. Please join in. Uh, Good afternoon, everybody. Good afternoon to all dignitaries out here. Thank you so much, Nitin ji, Anil sir, Tushar ji, Alka ma'am, for being here. And जैसे अभी अनिल सर ने कहा, I totally agree with him कि अगर हम चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते. I am a part of a group called NewsReach. एक हस्बैंड एंड वाइफ ने शुरू किया था, यंग कपल ने शुरू किया था एक रूम से. आज हमें 6 साल हो गए और हमारे पास 5,000 क्लाइंट है 6 साल में. स्टार्टअप इंडिया का पार्ट है. तो यहाँ पे हम जितने भी लोग हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं जहाँ पे हम पढ़ते हैं कि हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे हैं, फाइट कर रहे हैं, उनके पास कभी इम्यूनिशन नहीं थे, बट वी वन द वॉर. कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया ने या भारत ने बाहर जाके किसी और देश को कैप्चर किया हो, लेकिन हमने जरूर ये देखा है कि अगर हमारे पास जो भी एम्यूनिशन है, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, हमने उसे अच्छे से यूटिलाइज करके वी हैव ऑलवेज प्रॉस्पर्ड. टुडे भारत, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए थे हमारे, अब उनका थर्ड सेशन है सर, आई एम नॉट रॉन्ग, थर्ड सेशन है. तो जब वो आए थे तो सेंसेक्स 20,000 पे था, आज 70,000 प्लस पे है. So this is the kind of Bharat we all aspire for, which is growing and prospering day and night. I'll take you through what we do, NewsReach as a company. NewsReach is a PR and digital tech platform. हमारा एक PR और digital tech platform है. This is a startup, as I said. We are trying to build a platform technology based. हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, मेक इन भारत की बात करते हैं. डिजिटल इंडिया भी बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन ले आया है वर्ल्ड ओवर. इफ वी टॉक अबाउट कंपनीज लाइक पेटीएम, क्रेड, गूगल पे, तो फिनटेक, आज हम सब्जी भी लेने जाते हैं वो भी हम टेक एनेबल्ड हो गया. जोमैटो से हम ऑर्डर करते हैं खाना, वो भी टेक एनेबल्ड हो गया. सिमिलरली वी आर बिल्डिंग अ प्लेटफॉर्म वेयर इन मीडिया में जो भी डिसऑर्गेनाइज सेक्टर है उसे हम ऑर्गेनाइज करें एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके. एंड वी आर मेकिंग अ evolving PR tech platform basically by the name of NewsReach. Our founders, Mr. Darshan Shah and Ms. Sonia Kundani, we are basically very proud of, who have started this revolution, and we are trying to transform the entire scenario in media and PR industry. So, what all services we do? When we talk about media, media plays a very important role. It's an impression of our society. It's an impression of what we are doing. We have services like radio and podcast. Radio is something which I really love. In my previous organizations also, I have done a lot of work with radio. Prime Minister Narendra Modi is himself on radio. मन की बात करते हैं वो, तो मैं पूरी जानकारी मिल जाती है. मैं न्यूज़ सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो सुनता हूँ. To be very honest, I don't listen to any other TV channel or any other. I'm being a part of NewsReach, but primarily I love listening. Personally, I love listening news on All India Radio, क्योंकि वो बिल्कुल आपको क्लियर पिक्चर देखते हैं कि ठीक है प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट कैसे एड्रेस कर रही है, क्या रोल प्ले कर रही है, और आपको छोटे छोटे गांव के छोटे छोटे शहरों पे जहाँ पे असली भारत बसता है, वहाँ से आपको लोगों से कनेक्ट करते हैं. आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है हमारे देश में, कैसे प्रोग्रेस कर रहा है हमारा देश. और रेडियो में खाली ऑल इंडिया रेडियो नहीं है. आज वी हैव मोर देन 12 channels in Delhi itself in radio, and every radio channel I am very fond of, because एक तो बहुत बड़ा healthy है, entertaining है, interactive है. तो I don't know how many, most of the time, we are on mobile these days, though we are a tech enabled company, but still my personal inclination is towards radio a lot. In between, if you have any questions, please do raise your hand. We can make it a two-way interaction as well. It is not a one-way interaction because I'm a part of media.
So, अगर आपके कोई questions or you want to ask anything, you want to say anything, please feel free to raise your hand and ask a question if you have any question in between. Then, as I said, radio and podcast, we won an award. Amazon Web Services ने एक हमारी podcast series क्राफ्टिंग भारत को award मतलब कि हम sponsor किया था, उसमें हमें award मिला है. And this award was given by AdGully, and it has won many accolades. Our company has been a portfolio of Hindustan Times and Zee TV. So, Crafting Bharat में जो episodes आए थे, they were all CEOs of different MNCs, and they represented their journey कि उनको क्या क्या problems आए. Please, if you get time, do watch this series. It has got more than 100,000 views every episode, so I'm sure you will love it. And we are coming up with another Crafting Bharat series. It is a special edition now. In this Crafting Bharat series, it's a podcast series wherein we will have deep tech. अभी तक हम बात कर रहे हैं वेबसाइट की, एप्स की, टेक्नोलॉजी में, बट हम जो डीप टेक में लेके आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जैसे जो सैटेलाइट बनाती हैं. इट इज़ नॉट एन ईजी टेक्नोलॉजी, बट वो फोर फ्रंट में नहीं है, लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, तो उसके ऊपर हम पॉडकास्ट सीरीज कर रहे हैं. तो ऐसे डीप टेक में हम काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस को लेके आ रहे हैं विच इज़ हाईली टेक्निकली साउंड and which is not a regular technology that we talk in day in and day out. Plus, we also have expertise in regional media. अब भारत की बात करें तो भारत में विभिन्न भाषाएं हैं सर. तो हम सिर्फ हिंदी क्यों, हम तमिल में भी, गुजराती में भी, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी, मराठी में भी, बंगाली में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी जो लैंग्वेजेस, आसामीज में भी, हम सब में एक्सपर्टीज रखते हैं. और आपको रीजनल मीडिया में भी, इफ यू वांट एनी एम्पलीफिकेशन, स्केलेबिलिटी की बात हो रही है तो हम मीडिया में बोलते हैं एम्पलीफिकेशन. सो इट इज इफ यू हैव अ स्मॉल मे बी एन आर्टिस्ट इन एनी विलेज, एक रूरल एरिया में एक छोटा सा आर्टिस्ट है, उसको स्केल करना है, ही नीड्स विजिबिलिटी. सो थ्रू PR ही कैन डू इट एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट वाया अस. We are part of this beautiful event today, and we have done our best to amplify this event on different platforms. Similarly, if somebody is from a rural area and he's a startup and he wants to amplify and scale his event, he wants to create visibility, that can be done today's world on digital media and in mainstream media digitally at a very nominal price. That we can help you out with, and in vernacular languages, not necessarily English or Hindi. आपको अपनी लैंग्वेज में भी किसी में भी आपको पब्लिश करना है, किसी लोकल पब्लिकेशन में, रीजनल पब्लिकेशन में, वी कैन हेल्प यू आउट इन दैट. थैंक यू. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Any questions till now? Okay, thank you. So, PR market, थोड़े आंकड़े लाया हूँ, मैं थोड़ा आंकड़ों से दूर ही रहता हूँ इससे. आई एम मोर ऑफ अ सेल्स मार्केटिंग ब्रांडिंग गाय, बट सर आई अंडरस्टैंड आप फाइनेंस से हैं एंड बहुत मैटर करते हैं फिगर्स एंड फैक्ट्स. PR मार्केट ग्लोबली $100 बिलियन की है. इंडिया में 2.5 बिलियन, एशिया पैसिफिक में $50 बिलियन की मार्केट है ये. 5 लाख प्लस पब्लिशर्स हैं इंडिया में, एडवर्टाइजर्स 12 लाख प्लस और इन्फ्लुएंसर्स 1 लाख प्लस. So, Modi ji himself, world over people say he is the most followed world leader or world personality. So why? There is a PR that is working behind it. There is a lot of media people who work behind it, and they talk about our initiatives like Experiva itself. So इन एक्सपीरिवा आउट है, हम यहाँ पे भारत के बारे में बात करें, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बारे में बात करें कि यहाँ पे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम every single person can be tomorrow's billionaire. Or I got an opportunity to meet Adit Pachila. If you have heard Adit Pachila's name, any one of you, have you heard Adit Pachila's name? Okay, wonderful. So Adit Pachila basically is the founder of Zepto. He has made $4.1 billion company in Bharat just because of Startup India in 4 years time. $4.1 billion revenue. तो आप सोच सकते हैं कितना अपॉर्चुनिटी है हमारी कंट्री में और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला उसकी वजह से. क्विक कॉमर्स के एक्सपर्ट है Zepto. So that is the, and yes, in PR, in advertising, in digitally, we have got wonderful ecosystem today in Bharat across various spectrums and industries. So out here, let's be each other's helping hand. We are all interconnected. हमें फाइनेंस भी चाहिए, जैसे सर है यहाँ पे,
हमें मीडिया भी चाहिए, हमें विजिबिलिटी भी चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, हमें लैंड भी चाहिए, जैसे अभी तुषार जी बोले थे, वी नीड एजुकेशन लाइक मैम वाज सेइंग, अभी अलका मैम बोल रहे थे, और हमें ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी चाहिए जैसे नितिन जी ने अभी प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है. So let's scale it, let's talk about it, let's meet each other, let's be one. Together everyone can achieve more, together everyone achieves more. Team effort जिसे बोलते हैं, भारत एज ए टीम अगर काम करे, नॉट कि मैं जैसे हमने वो मूवी देख ली चक दे इंडिया, कहता कहाँ से हो, कोई कहता राजस्थान से हो, कोई कहता पंजाब से, कहता नहीं हम टीम इंडिया से हैं, हम टीम भारत से हैं. तो अगर हम ये सब सोच के काम करें तो बड़ी से बड़ी ताकत भारत को नहीं ला सकते, हम बहुत आगे बढ़ेंगे अपने देश को लेकर आगे. So we are talking about integrated platform, tech platform, जो market place हमने create किया. तो ये हमारे कुछ clients हैं यहाँ पे, कैडबरी, मालाबार ज्वेलर्स, मुथूट फाइनेंस कॉर्प. आप अपनी प्रेस रिलीज या अपनी रिक्वायरमेंट इस प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर सकते हैं, एंड वी विल इंश्योर दैट इट गेट पब्लिश अक्रॉस डिफरेंट media channels and across different publications. Few of our top publisher partners are NDTV, Z News, India Today. We also have some presence in Dubai, Khalish Times and Gulf News we work with. Then VC Circle. VC Circle पे I would request, because you all of you are entrepreneurs, VC Circle जरूर आप एक बारी दिन में आपको टाइम मिलता है जरूर स्टडी कीजिए उसको, because there are a lot of investors, there are a lot of MNCs, there are a lot of startups, there are a lot of family offices, गवर्नमेंट के काफी सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उसके ऊपर VC सर्कल पे जो अपने व्यूज देते हैं, दे इंटरैक्ट एंड दे राइट व्हाट the entire industry is going to be or where we are leading towards. So brand that trust us in technology, Amazon Web Services, Mathco, Makers Hive and few more. So we have presence in technology, then we have presence in education and hospitality. So brands like Apollo Hospital, Bits Pilani are with us in technology, in education and hospitality. Then in automotive, we have BMW. Henry Ford का example दिया था सर ने. BMW is one of our premium clients that we work with. And Maruti Suzuki, Vespa, Yamaha, Rapido Bikes, which is like Ola for bikes. जैसे ओला आप कैब्स के लिए यूज करते हैं तो Rapido is for bikes. Wealth and finance में we have clients like HSBC, Centrum Wealth and so on. In real estate, we have clients like Hightex, Shobha, Purnavankara, and then various other miscellaneous brands that we all love, Cadbury, Paid Puja, Zeiss, which is for glasses. So we work across industries. We are not limited to any one sector. We are working across industries because any and every industry needs visibility, a positive visibility, a profiling to be done, scalability, amplification. And then we will come back to what our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi said, and I really love it. That's why I put this slide: transform, reform, and perform. So, first we have an ideation. Sir was talking about that we need to have an idea. We have to start from somewhere. Once we have an idea, then we need to transform it into, basically manifest it into a level wherein, it gets onto a working platform or we execute that idea. We need to transform ourselves. If we have an idea, how to bring it on road, or how, not only on paper, but in reality. And once the transformation is done, then we do reform. And once the reform is brought, then we perform. And that performance is where, we all talk about that India's GDP today is 8%, and it is one of the highest GDP across the world, while European countries and America is still struggling to get to that level. Okay. Now, a very important part, communication. हम भारत एक्सपो में आज, communication is not only a base of any business or entrepreneurship, but it is the base of our life. आज हम कैसे बोल रहे हैं, आज हम क्या convey कर रहे हैं, whether, even silence is a way of communication. At times you have to be silent. That is also, you're communicating something. So whatever you're saying, whatever word you say, every word has one of our main motto in communication.
We want that every communication we do, it fuels into innovation, क्योंकि जितना आप communicate करोगे, evolve होगे आप, उतना ही आप innovate कर पाओगे, उतना ही problem solving होगा. Problem solving में बहुत अच्छी बात बोली गई है, and I was listening to one of the world leaders and he said, instead of talking about each other, talk to each other. तो ये भी वे ऑफ कम्युनिकेशन, हम एक दूसरे के बारे में बात करते रहे, वो नहीं, आप एक दूसरे से बात करके काम करें तो ज़्यादा अच्छा है. दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. And we play a very important role by media storytelling in this. So a lot of time there is crisis management that has to be done. A lot of time there has to be problems that have to be resolved and addressed in masses. So we do it by media storytelling via our platform. And this basically media storytelling is a bridge between people, culture, and ideas. Okay, now we come to the next aspect. Once we do communication, what next? Obviously, once we are popular, we all want to become a brand. What is a brand? So, can any one of you tell me what does a brand mean? So, anyone can tell me. What do you mean by the word brand? आप slide देख के बोले, Google देख के बोले, अपनी मर्जी से बोले. Yes, sir, please. Okay, what's your name, please? Jaydeep Parashar. And your company name? Rethink AI. I'm sure your company will go a long way, sir. Wonderful answer. Trust. So you're building trust. Any business is built on trust. So he's amplifying trust in his customers and in ecosystem. So when we say brand, people will be ready to pay premium to you once you become a brand. For example, today I have a laptop which is of Apple. I can have another laptop of same configuration, but there's no logo of Apple. So would you think that people will pay for it the same amount? No, there's a brand Apple on it. That's why people are paying premium to it. So that comes via visibility and trust, as Sir said. So thank you so much. I really appreciate. And I think you're on the right path. And very ethical also. Winning trust is not easy in these days. So a brand is not what you say it is, what others say it is. जैसे हम सेल्फलेस सर्विस की बात कर रहे थे, अभी सर ने बोला निस्वार्थ सेवा भाव से, लोग बोले आपके बारे में, हम निस्वार्थ सेवा भाव से सेवा करें और अपने आप ही कहते हैं पूरी कायनात लग जाती है, पूरा यूनिवर्स लग जाता है आपको. एक बहुत फेमस डायलॉग भी है ऐसा कि आप दिल से अगर किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात और पूरा यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है, लेकिन वो निस्वार्थ भाव होना चाहिए तभी. So that is how brands also become. But this statement or this quotation was by Philip Kotler, who is a marketing guru. A strong brand visibility ensures that company is recognized and remembered by the target audiences. So once we do a media release or a publication, we ensure that we reach out to target audience. That is very much important. So where your target audience is, we define it and we ensure that we reach out to them. And that also helps in mitigating risk and economic downturns and negative publicity also a number of times. Once you're a good brand, a brand like Maggie once got disappeared from India, लेकिन वापस आया वो ब्रांड. उन्होंने उसको फेस किया, क्राइसिस को फेस किया. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, देयर वाज किसी छोटे से गांव में भारत के एक साइंटिस्ट ने बोला कि मैगी में लेड का कंटेंट ज़्यादा है, एंड मैगी हैड टू फेस इट एंड मैगी रेक्टिफाइड इट एंड मैगी वाज ऑफ द मार्केट. लेकिन मैगी फिर से आया एंड टुडे अगेन इटसेल्फ इज अ बिग ब्रांड, बट दे एड्रेस्ड इट इन मीडिया, दे वेंट टू मासेस. Such kind of crisis management is also done by media interference or by reaching out to masses, because you cannot reach out to a huge number of people in one go. You need to have a medium. Physically you cannot reach out, what I mean to say is. So for that, media plays a very important role. As we were talking about brand visibility, second is brand recall. So once we talk about brand recall, a strong brand is like a beacon that guides people to your door. So Walt Disney. So I'm very fond of Walt Disney. I hope you all must be very fond of Walt Disney. As a kid, I loved Disney characters. So even they think about brand recall. कि मिकी माउस और डोनाल्ड डक सबको याद रहना चाहिए. कार्टून्स हम देखते हैं वो सबको याद रहना चाहिए, एंटरटेनमेंट सबको याद रहना चाहिए. लाइफ में टेंशन वैसी कम है क्या, लेकिन आपको खुशी चाहिए तो उसके लिए ब्रांड रिकॉल. मूवीज क्या हैं, बहुत सारे मूवी स्टार्स के हमें नाम याद रहते हैं, लेकिन एंटरटेनिंग मूवी ज़्यादा याद रहती है हमारे को. तो सीरियस मूवी थोड़ी कम याद रहती है, क्योंकि वो एक ब्रांड रिकॉल वैल्यू
उन्होंने क्रिएट किया अपने थॉट प्रोसेस से, अपने कम्युनिकेशन से, अपने ब्रांड विजिबिलिटी से. So, as Sir said, a brand recall can happen if and only if there is trust. So, we need to understand what we are communicating in media. Whether we are doing a PR engagement, whether we are doing events like these, what Nitin sir has initiated. So, we have to be very aligned towards the thought of our goals, of our values, and what value we are adding to the end user or to the customer. And trust me, I personally believe if we add value to the end user and that too selflessly, money will become a byproduct and we will go a long way. So it's not necessarily always you have to work for money. If you communicate also in a manner wherein uh, other person sees value in it, rest everything will become a byproduct. There's a very famous saying: "Find a purpose, and means will follow." You find a purpose and communicate that purpose, and means will start following, and people will join you for that why and for that purpose for sure. These days, profiling, every person today is doing profiling of his brand, of his company, of his personal goals, of his own career achievements. So we are into profiling as well. भारत भी एक हम अपनी कंट्री का भी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं आज यहाँ पे. मेक इन इंडिया का प्रोफाइलिंग कर रहे हैं कि किस तरह से हम मेक इन इंडिया को और भारत को इस लेवल पे लेके आए कि पूरी दुनिया में लोग जाने कि भारत से अच्छा देश और भारत से अच्छे लोग कहीं नहीं है. तो उसके लिए भी हम एक प्रोफाइलिंग, उसके लिए भी हमारे को एक अवेयरनेस, जैसे मैंने आपको आदित्य पचीला का एग्जांपल दिया था, जो कि जेप्टो के फाउंडर है. उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना मीडिया में प्रोफाइलिंग करा अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, अपने सीईओ का प्रोफाइलिंग किया. हम पॉडकास्ट सीरीज करते हैं क्राफ्टिंग भारत, वहाँ पे भी पॉडकास्ट सीरीज इज ऑल अबाउट प्रोफाइलिंग, दे टॉक अबाउट द जर्नी. So profiling happens automatically in the process. So that is one of our strengths. But yes, I personally believe, the lot of youngsters join in my organization. मैं सबसे पहले बोलता हूँ LinkedIn में अपना प्रोफाइल बनाओ. You should be very active on LinkedIn. It's a professional platform. Forget अभी because they have just started their journey. So forget YouTube broadcast and all, and but start from at least LinkedIn. You should have very strong profiling on LinkedIn and on other media channels also, which are related to your career, that can add value to your life and to life of others as well. It helps you in decision making. It helps to identify emerging and making market shifts as well. How markets are shifting towards which direction. Technology is evolving very fast. We never thought that everything will come on one mobile phone. Today everything is on an app. You never know. In कल तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि मैं spectacles पहनो and I can order from a blink of an eye. AI के ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आ जाए. तो इनोवेशन यू नेवर नो वेयर इट कैन टेक यू टू. अभी बहुत सारे अमेरिका में तो मैं देख रहा हूँ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे 3D में लेक्चर्स दे रहे हैं वो, और पूरी इमेज फॉर्म हो जाती है स्कूल के अंदर, एंड जैसे एक 3D मूवी देखते हैं वैसे इमेज फॉर्म हो जाती है. इंडिया हैज टू स्टिल रीच दैट लेवल, बट दे हैव रीच दैट लेवल, एंड but yes, we are not very far from that vision or from that goal, and we will go much farther than that. ये बहुत फेवरेट पार्ट है मेरा, क्रिएट फैंस नॉट फॉलोअर्स. कोई डिफरेंस बता सकता है? बस तो स्लाइड आपके सामने है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैन एंड फॉलोअर्स? एनीबॉडी कैन टेल मी. एक फॉलोअर है आपका और एक फैन है. सर प्लीज. वाओ. And from that moment, he always quoted all my books, all my ideas, and if any time I made any comment anywhere, he was the first to respond. He is my brother. He never met me. He never spoke. But he always put a comment. He is my brother. Wonderful. Wonderful. बहुत जोरदार तालियां आपका. फर्स्ट फैक्टर आपने यहीं से विन कर लिया. अभी हम हमारे भारत देश के भी बहुत सारे हम फैन हैं. हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत सारे फैन हैं हम यहाँ पे. माइट बी वी नॉट, बट हम मिले नहीं उनसे इन पर्सन, लेकिन हम फैन हैं उनके. फॉलोअर्स भी हैं लेकिन फैन ज़्यादा हैं.
There's a difference between being a fan and followers, but yes, our motto should be to create fan and not merely a follower in the sense, and the fans will come automatically if you add value and trust to what you are doing, to your work, to your product, to your service, to your environment, to your ecosystem, to the person living next door. वहीं से हम अपने जो जर्नी है ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म और परफॉर्म की शुरू कर सकते हैं. The basic difference between a fan and a form and a follower is that there's an emotional connect in a fan. Follower is just aware of what you're doing and he's just looking for the services that you have. But once you are emotionally connected, then obviously he becomes your fan, or your audiences or your target customer, he also becomes your fan. Engagement is very important. आप LinkedIn पे engage कर रहे थे, तो fan will engage with you. I engage with a lot of people I admire and they inspire me a lot. So there are many names. There are big people. I've just started my journey in front of them, as if we compare to the kind of achievements they have achieved. So, but I ensure that I engage with them. Their offices, I engage with their offices. Small example is of H.C. Mariwala, if you have heard his name. Marico Industry के ओनर हैं. Parachute coconut oil and उनके सफोला जो oil है active, it's the product of Marico Industries. So I engaged with him on Twitter, I engaged with him on LinkedIn, and he reciprocated. I wrote to Anand Mahindra ji, he reciprocated on mail. I wrote to Azim Prem ji on his birthday because I admire him, he reciprocated. So I'm a fan of Azim Prem ji, I'm a fan of Wipro, I'm a fan of Mahindra ji, Anand Mahindra ji. So that's why I'm engaging with them. So similarly, people will engage with you, if there is an emotional connect and they find that value and they see that you're ethical and there's a very strong trust that you have built in. And with that follows the loyalty, you build a community, there are strategic implications, nurturing strategies and examples. I won't take much of a time because I know there's more there are more guest lectures or people who have to address. So at the last, the best thing when we talk about fan engagement is हर घर तिरंगा जो अभी हमने इनिशिएटिव लिया था भारत में. So that is a fan engagement activity, and but if there is a follower, he will simply see, ठीक है, it is one of the activities that's happening in Bharat. लेकिन आप अगर proud Indian हो, आप एक गर्व से कहते हो कि मैं भारतीय हूँ, तो आपने वो तिरंगा जरूर लगाया होगा अपने घर में या अपने ऑफिस में या अपने शॉप में या अपनी इंडस्ट्री में जरूर लगाया होगा आपने वो. That is one of the engagement where you can say the latest example, how proud we are as an Indian or as Bharatiya. Then there's some work that is done by us in TOI and in different publications. At the NewsReach, we are very much aligned with the thought of our country or the vision of our country, which is एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत. और इसमें हर एक पर्सन का, मैं बात करता सोल्जर्स की, हम सब यहाँ पे सोल्जर्स हैं, हम सब किसी ना किसी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं भारत में, मेक इन इंडिया में, इस कंट्री को आगे लेके जाने के लिए. तो अगर हम एज ए यूनिट काम करें, वी डू इट सेल्फलेस, जैसे सर ने बोला 350 एनजीओ, इट इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट. बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये. सिर्फ 2 लोगों ने, शायद 3 लोगों ने सर शुरू किया था, 5 लोगों ने शुरू किया 100 रुपये से. I was taken aback. I was very impressed also कि 5 लोगों ने शुरू किया 100 रुपये से, और आज 350 एनजीओ, इतना बड़ा काम है. उन्हीं में से, उन्हीं बच्चों में से, वहीं से जहाँ पे ये एनजीओ का कोई ना कोई ऐसा जरूर निकलेगा जो एक दिन कैंसर का इलाज ढूंढेगा. आई एम श्योर इतना इंस्पायर्ड होंगे वो बच्चे, इतना उनका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, या कुछ ऐसा कर जाएंगे जो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाया. ऐसे ओलंपिक्स के मेडल जीत जाएंगे जो दुनिया में, या रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे जो पूरी दुनिया में कोई नहीं अचीव कर पाया. पर शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है. आज हमने वो शुरुआत यहाँ से करी है, भारत एक्सपो से करी है. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर, एंड वी विल बी इन टच, एंड प्लीज डू मीट मी. आई लव टू इंटरेक्ट विद एवरी सिंगल पर्सन ऑफ यू आउट हियर. This is Paras Kochhar representing NewsReach and Bharat and Make in India and Expo concept, and all of you out there. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Farouk, for making us aware of what media can do and cannot. And we have to actually work on